Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. Today is like the most awaited video on my channel and the most requested one as well. So we are doing a Sarojini Nagar haul today, and this doesn't look like I'm excited, but I am. Trust me, I am. You can see the shadow of the stuff that I have kept besides me. I have a lot and a lot of stuff. So this is not just something that I got for myself, but some stuff is out of this. Like some stuff is which I got for one of my friend's mother, and so yeah, we are going to have a look at this together. And one thing that I need to mention before starting the haul is, if you're not from Delhi, you are not like missing out very much, but you are missing out a little bit. So you should try visiting Sarojini sometime soon, and whenever you're comfortable, whenever you plan to visit Delhi, you can. The easiest way to reach Sarojini, if you don't live in South Delhi, or if you're not going to visit the South Delhi wala area, but you're going to live in some other part of Delhi, so the best way to reach is metro. No other way. बहुत ट्रैफिक, बहुत टाइम, बहुत ये सब चीज़ें, बट दे वुड बी मोर कम्फर्टेबल, बट दे वुड बी मोर लाइक टाइम वाला चीज़. सो आई पर्सनली लाइक रीचिंग सरोजनी एट 9 or 10 AM, because at that time it's like the most silent market and there's no crowd and no fishy stuff happening. So I do try to bargain a lot, but मैं जनरली शॉप्स से खरीदती हूँ इंस्टेड ऑफ दोज गोल पटरीज. तो मुझे इतना सस्ता नहीं मिलता है, बट क्योंकि उन पे डिफेक्टेड पीसेस भी होते हैं. बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि डिफेक्टेड पीसेस निकलते हैं और घर आके देखती हूँ मैं तो वो नहीं पहने जाते. तो आई ट्राई टू बाई इट फ्रॉम शॉप्स ओनली, एंड शॉप्स वाले जनरली बार्गेन नहीं करते हैं, उनके फिक्स प्राइसेस होते हैं. सो that's one demerit that I personally face, but still a top for 250 or 350 is not bad, which you actually like. I've seen same tops, like एक टॉप पे मैं बताऊँगी, मैंने पंख क्लोथिंग पे सेम टॉप एग्जैक्टली द सेम फॉर 1400 रुपीज़ मैंने देखा था, बट उसके कलर्स अ लिटिल बिट डिफरेंट थे, बट स्टिल द थिंग इज़ सेम. सो how does it make a difference in the price so much? I don't know. Anyways, so yeah, the easiest way to reach is get down to metro. सरोजनी नगर का खुद का स्टेशन है ऑन पिंक लाइन, बट इफ़ यू कमिंग फ्रॉम येलो लाइन देन गेट डाउन एट INA. एंड अगर और किसी भी लाइन से आ रहे हो देन डू चेंज एट पिंक और येलो लाइन, बिकॉज INA और सरोजनी नगर ये दो स्टेशन है जो क्लोजेस्ट हैं. Otherwise you're gonna just get lost. Okay, so that's too much of introduction and too much of explanation on how to reach. Now let's just quickly start with the video. By the way, if you're wondering, let me just break down my outfit for you guys. This top that I'm wearing is from SSS. If you want to see SSS haul, please comment down karo yaar. Comment down. I'll put down a SSS haul soon as well. And this chain is from Jules Galaxy. It is also available on Amazon. Jules Galaxy search कर लेना, Amazon पे दिख जाएगा. And this black basic inner is from H&M, and the bottom that I'm wearing, it's a wide leg jean. Let me just show you. It's a wide leg jean and it's from Freakins. I really love how it fits my body and how it hugs me on all the right places. So I really would recommend you getting these. And there's a lot more stuff that I have from Freakins as well. So if you want to see a Freakins haul, comment down. And now without any further ado, let's just quickly start with the video because it's been long. So starting with the first category, my favorite category, bags. And let me show you how many of them do I have. It's visible? No, it's not. Anyways, so I have 1 2 3 4 5 6 bags, out of which 5 bags are for me, and the last one, like the 6th one, is for my friend's mother. And yeah, so this is the first one. ये मैं सबकी शॉप्स बताती जाऊँगी. आई डोंट रिमेंबर द शॉप नंबर्स, बट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू रीच एट दोज प्लेसेस. तो पहले ग्रेफिटी लेन, इफ़ यू नो, लाइक
सरोजनी नगर मार्केट में फ्रॉम द पिंक लाइन वाला जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से व्हेन यू एंटर फ्रॉम सरोजनी नगर के गेट नंबर 1 या 4, तो यू गो स्ट्रेट एंड इस साइड पे ग्राफिटी लेन है. यू गो टू द ग्राफिटी लेन एंड देन इस साइड पे यू हैव टू टेक अ लेफ्ट एंड एंड पे जाके एक बैग्स का स्टोर है, उसके सामने डेनिम्स वाला है, एक टॉप्स वाला है. उस साइड पे अच्छे कपड़े हैं, सो यू कैन गेट फ्रॉम देम एज वेल. बट वो बैग्स वाले अंकल वो थोड़े से रूड है, बट उनके पास अच्छे थे until आई फिगर्ड दूसरी शॉप आउट. आई फिगर्ड द शॉप आउट एंड आई नेवर वेंट बैक टू दैट अंकल. आई ओनली गो एट दैट स्टोर. मतलब मैं उसके बाद 4 बार ही जा चुकी सरोजनी एंड मैं सिर्फ उसी शॉप पे गई हूँ. यार एक गिरेगा. एंड मैं सिर्फ उसी शॉप पे गई हूँ. सो you know how much I love that shop now, so I never went back to this. But इनसे मेरे पास 2 bags हैं, so I'm gonna show you what bags I have. So first is this one. This is a little bit of beige color में, and it's a very decent bag, cute and nice to carry. It has a long chain. It's of a very small and sophisticated size. I generally carry this size only whenever I only need to keep my wallet, phone and lip balm inside. Today आज की डेट में एक extra mask और sanitizer भी. So yeah, I really like this bag. This one was for 350. I tried to bargain a lot, but he was like, लेना लो जाओ वरना. And at that time I really liked it, so I could not leave it. So I was like, दे दो. मतलब मैं उनको बोल रही थी कि उतार के एक बार ही दिखा दो, चेक करा दो, तो वो भी नहीं कर रहे थे. वो कह रहे लेना है तो ही उतारूंगा वरना नहीं उतारूंगा. मतलब उन्होंने एक ऐसे कुछ चीज़ पे टांगे हुए थे सारे बैग्स, बहुत ऐसे क्राउडेड सीट जगह कर रखी थी. तो मैंने बोला एक बार उतार के दिखा दो, मैं देख लूँगी, ऐसे डाल डूल के देख लूँगी, तसल्ली हो जाएगी. बट ही सेड लेना है तो ही उतारूंगा वरना नहीं उतारूंगा. एंड ही वाज जस्ट इग्नोरिंग मी बेसिकली, बट आई हैड टू गेट इट बिकॉज आई लाइक्ड इट. Anyways, the second bag from them is this one. I don't know why I got this one. I don't like it. I seriously don't. So this is a very long strap that it comes with, and इसके पीछे यहाँ पे एक और extra strap भी है इसके साथ में. Where is it? मेरी अलमीरा में पड़ी होगी. वो अलग सा स्ट्रैप है जो यहाँ पर डाल सकते हो, एंड इट बिकम्स अ वेस्ट बैग, जो कि बहुत बड़ा साइज़ है एक वेस्ट बैग के लिए. प्लस आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई आई गॉट. मैं इसको 1-2 बारी बाहर लेके जा चुकी हूँ, बट आई जस्ट डोंट लाइक इट. लाइक आई जस्ट गॉट इट बिकॉज आई वॉन्टेड अ वेस्ट बैग, बट एट दैट टाइम आई डोंट थिंक सो आई हैड द नॉलेज ऑफ शॉपिंग. I don't know. And this is not like एक टाइम में ख़रीदा हुआ. It's like I went 2-3 times and वो सब conclusively as a whole I'm showing. मैं अपना मैं अपना singularly इसलिए नहीं करना चाहती थी because I don't know. I wanted to shoot it at the location, but I didn't feel confident enough, so I was like, okay, let's just leave it and मैं घर पे कर लूँगी. Okay, so yeah, this was from the same uncle and it was again for 250 rupees or 350 rupees. I guess 250. I'm sorry if I hit my mic. Yeah, it's a nice, decent quality. Looks completely cheap, and I don't know why I got this. Okay, now comes the most favorite one. So now this shop is a different shop. हम ग्राफिटी लेन से इधर मुड़े थे ना, अब हमें इधर नहीं मुड़ना. ग्राफिटी लेन पे खड़े हो जाना और सामने देखोगे एकदम बिग सी है. बिग सी के साथ में एकदम साथ में एक बैग्स की शॉप है, एंड दैट शॉप and that shop is my favorite, and I have been obsessed with these bags. So these are like, हाँ तो 4 bags बचे हैं अभी. So this is the first one and it's in such a pretty beige. What is happening? Why am I fumbling so much? So it's in a pretty beige brown color and इस पे adjust कर सकते हो आप straps, आपको किस length तक चाहिए, and it is very spacious and ये already थोड़ा मोटे shape में है. So even if you stuff it a lot ना, it won't look like it's been stuffed or something like that. So yeah, it has loads of space.
एंड इट हैज़ एक मिनी चेन जिसमें आप अपना मनी रख सकते हो, एंड एक साइड में भी एक जिप है, सो इट हैज़ नाइस स्पेस. आई पर्सनली लाइक इट. द क्वालिटी इज़ good, and it was for 600 rupees, I guess. Yes, it was for 600 rupees, and Instagram पे easily available for 1200 or more than that. And when I saw this I was like, I have to get this. यार मैं इस साइड नहीं करना चाहिए, मेरे को इस साइड करना चाहिए, उधर ना माइक पे लग रहा है. Yeah, so I absolutely love it. I will be adjusting the try on parts, like the how they look on me while I carry them wala cheese anywhere, and you can see for yourself how amazing is this bag. ये मैंने पूरा चेक पैक करके लिया था because मुझे इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं चाहिए था. So I love it, and this is my first purchase from them, उसी store से. And then there are 3 more bags from the same store. Another Instagram famous bag is this one. I love it, love it, love it, like I love it so much. This is a perfect bag, like perfect with any outfit, and I don't know what to say about it. It's in this beautiful print, thoda crocodile sort of, and I have Forever 21 se shoes, boots in the same print, so the look altogether is just, they both just ace that look like together. So yeah, and this one is not very spacious, but you can still stuff a lot of stuff in this, and अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालोगे थोड़ा सा फ्लफ़ी लगने लग जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. ठीक है, जितना मतलब फ़ोन, वॉलेट, सैनिटाइज़र, मास्क, सैनिटाइज़र मास्क इतना इम्पॉर्टेंट हो गया, एंड योर power bank, uski lead, lip balm. I have added all of this and still it did not look bulky, so it's a pretty good वो, and इसका प्राइस था 500 रुपीज़. एंड ये वाला अभी भी बहुत उस पर अवेलेबल है, बहुत डिज़ाइंस में, बहुत शेप्स में. तब तो सिर्फ ये शेप अवेलेबल थी और सिर्फ ये साइज़ अवेलेबल था, बट नाउ दे डू हैव इट इन 2 more sizes. एक इससे थोड़ा सा छोटा है, एक इससे थोड़ा सा बड़ा है, एंड स्ट्रैप्स में भी साइजेस हैं. दिस वाले का स्ट्रैप इज़ नॉट एडजस्टेबल, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली वाज लुकिंग फॉर. तो या, एंड जब तक शीन था तब तक मैं ऑनलाइन शॉपर थी नहीं, तो मैंने कभी शीन का दुख नहीं मनाया. बट नाउ दैट आई फाउंड एटलीस्ट अ बैग्स का गुड स्टोर इन सरोजनी, आई एम लाइक सेटिस्फाइड. नाउ वेन एवर आई नीड न्यू बैग्स आई एम गोइंग टू देम ओनली. मैं तो उनसे अभी मैं कल ही गई थी, मैं उनसे पूछने भी वाली थी कि भैया डू यू डिलीवर, एंड मैंने पूछा नहीं. मैं पूछ लेती, अगर वो हाँ बोल देते ना तो मेरी लाइफ सॉर्टेड थी. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ दिस very Instagram famous, and I also saw this on H&M, and one of my follower, like that friend's mom जिनकी मैंने बात करी है, she was like obsessed with this bag and she wanted it, and I already had it, so she loved it so much that now I'm giving it to her, and मैंने अपने लिए दूसरा ख़रीद लिया, and I think it's a fair deal. and ये चार्ल्स एंड कीथ का है, बट इट्स ऑब्वियसली अ कॉपी. यहाँ पे चार्ल्स एंड कीथ की जगह चार्ल्स एंड कीच लिखा हुआ है, विच इज़ सो लीच. एंड इसकी क्वालिटी इज़ लाइक द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द बैग्स आई हैव शोन यू टिल नाउ. इसकी जिप्स पे भी चार्ल्स एंड कीच लिखा हुआ है, चार्ल्स एंड कीच. एंड इसमें एक फ्रंट जिप है यहाँ पर है. देन there's this opening, and then under you have 2 compartments, and then one more zip, and it is not very spacious, I would say. मतलब you can still stuff quite a lot of stuff, but मेरा एक wallet आ जाता है ना, मेरा wallet is like full size, तो एक wallet के बाद there's very little space left, तो ठीक है, it's not very spacious but it's good, and it's a very like high end purchase I feel.
This one was again for 600 rupees, and I love it. I actually love this bag. I don't feel like giving it to her, but I will have to because she loved it more than me, and I am privileged enough to go to Sarojini anytime, but she is not. She lives in Punjab, so it's like way far from her home, so I will have to do this kurbani. Anyways, the last bag that we have is this one. I wanted a black bag because I was giving away my black bag and I didn't have any left behind apart from this one which I don't want to use. Yeah, it's like a nice bag but it looks cheap. That's my concern. So we have this one. अभी ये कल ही लाई हूँ मैं, तो इसका वो भी नहीं उतारा है मैंने. Should I remove it? I should. I'm like excited. I was just looking at myself. How am I even looking? I didn't do any check for the photo or video. यार ये ना उतर नहीं रहा है. I'll do that later. But anyways, this is the bag. It looks very spacious to me, but I don't know how it is going to be. It has been stuffed with a lot of newspaper and it looks spacious, like decently spacious. So it's a nice and a very decent bag. I love it again. And मतलब मैं उनकी शॉप पे ना जितने ब्लैक बैग्स थे मैं उनको सबकी फ़ोटो भेज चुकी थी कि मेरा बैग बच जाए. But she didn't like any. She's like either this or I'm getting the same from H&M because H&M पे same 1400 का available है. And she could have get that, but it was like half of the price she had to pay, so obviously she would love this and I had no issues in giving it to her. थोड़ा सा दुख हुआ, but it's like okay, I am privileged again. I'll have to mention that. So yeah, this is the last bag that we have. And ये store जो है, ये shop जो है, ये Big C के साथ में है and I love it. Anyways, I am blabbering a lot just because I was so excited. Anyways, I am gonna see you guys soon in my another video, and till then please support your girl because she needs support now. I am trying to be as consistent as possible. Now I do have a laptop, I do have editing stuff, so I can edit at my own pace and time, so there's no interruption, there's no problems, nothing. So wish me luck and wish me consistency so that I can just be consistent, and I'll see you guys soon with any video that you guys would want me to do. Bye. Like, share, comment, subscribe, sub kar dena because you guys are good and I'm a good girl too. Okay, bye.